Hello, Delhi Chili viewers. A very happy Women's Day to you all. We all are very special creature of God. इतने स्पेशल हैं, देखिए कि हमारे लिए पूरा एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑल्दो आप ये ना भूलिए कि सब दिन हमारे लिए इक्वली स्पेशल होते हैं. आज दिल्ली चिली एक बहुत ही स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है वेडिंग मंत्रा मैगजीन के साथ. सारी सुपीरियर लेडीज़ को, हार्ड वर्किंग लेडीज़ को हाई एंड सैल्यूट करता है, सलाम करता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनकी सारी कामयाबियों के लिए. चलिए आइए मैं आपकी सबसे पहले बात कराती हूँ वेरी फेमस एंड रिनोन्ड डिज़ाइनर शालिनी चौहान से. उनसे पूछते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. आप उनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, चलिए आइए बात करते हैं. हेलो शालिनी, वेलकम ऑन द शो. Thank you very much. A very happy Women's Day to you and to all the viewers. जी. शालिनी जी, योर लाइफ बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन, यू आर सेल्फ मेड वुमेन. इतने ब्यूटीफुल आपके डिज़ाइंस हैं, आप एक वेल नोन डिज़ाइनर हैं. हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, स्पेशल बीइंग टुडे इज़ वुमेंस डे. हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं आपसे कुछ इंस्पिरेशन लें. आप बताइए प्लीज़, हम अपने बारे में कुछ बताइए. I believe that tough times never last, but tough women do. As a child, when I was growing up, my father taught me one thing. He said, don't focus on being a good daughter or a good sister or a good friend or later a good wife. Focus on being a good human being and everything else falls into place. आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया शालिनी जी. आप ये बताइए, आपके कुछ अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग शोज़ आपका कुछ है तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट इक्वली. I'm right now working on my new spring collection called the Mystic Collection. I've also recently launched my jewelry line, and I'm now working on temple jewelry, where I'm doing pendants with Ganesh Ji, Baba Ji, Devi Ma, Lord Shiva, and many more. So yeah, my Mystic Collection is what's coming up very soon. शालिनी, बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल वुमेन एम्पावरमेंट में आपका क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हमारे थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Follow your dreams, don't give up on your dreams, believe in yourself and make all your dreams come into reality. अगर आप अपने आप में believe करेंगे तो सब कुछ अपने आप it will all fall into place together. You have to believe in yourself. अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि जैसे लोग कुछ वुमेंस डे के लिए तो इतना ज़्यादा वुमेंस को मतलब करते हैं कि वुमेंस डे, लेकिन बाकी दिन कोई उस पर ऐसा सच कोई वो नहीं होता. इतने क्राइम्स हैं, सब हैं. आप क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे कि वुमेंस डे क्या सिर्फ एक वुमेंस डे वाले दिन ही सेलिब्रेट होना चाहिए या हमेशा ही हमारा वुमेंस डे होता है? वी आर स्पेशल, वी आर सो स्पेशल, यू आर स्पेशल. टेल अस. I think that we celebrate Women's Day every day, just the way I believe I celebrate my birthday every day. This life is a beautiful gift given to us by God, and we have to cherish it. We have to cherish ourselves. We have to love ourselves and respect ourselves and honor ourselves, and the world will just follow. तो शालिनी जी, आपको कैसा लगा दिल्ली चिली का ये जो हमने एक नया शुरुआत की है वर्ल्ड के लिए? हम एक इवेंट की, इससे वी आर ऑनरिंग द लीडिंग लेडीज़, एक्सक्लूसिव इवेंट हम आज एक सेलिब्रेट कर रहे हैं वेडिंग मंत्रा के साथ. आपको ये कैसा लगा? I think you've made us feel very, very special. That's because you're very special yourself. And I think it's a very, very noble cause to make a few people feel very, very special on this day, so that all the guests you have here feel that they have achieved something in life, and this is a validation of that achievement. And it's great that you're doing this. Congratulations on this. Thank you so much, Shalini ji, for coming to my show and giving us so much motivational tips, so much telling about your life. Thank you so much. Rise and shine. Thank you so much. It's an honor being here with you. Friends, on this very special occasion of Women's Day, today we are feeling very blessed. हमारे बीच अभी सेलिब्रिटी चैरो कार्ड रीडर पूनम सेठी जी प्रेजेंट हैं, जिनको हमारे इवेंट का कंसेप्ट वुमेंस डे का वेडिंग मंत्रा के साथ बहुत अच्छा लगा, वो इसका पार्ट बनी है. चलिए आइए उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग कैसे रही है और वो आप लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकती हैं. हेलो पूनम जी, वेलकम ऑन द शो. My pleasure, and Delhi Chili rocks. ओके पूनम जी, दिस इज़ अ स्पेशल डे फॉर वुमेन. आप हमारे थ्रू हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी इंस्पायरिंग बातें बताइए जिससे हमारे व्यूअर्स भी इंस्पायर हो जाएं. मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, नो डाउट, बट मैं चाहती हूँ सब इंस्पायर हो.
See, till there's no necessity, जब तक necessity नहीं होती तो invention नहीं होता. एंड अब मुझे 27 साल हो गए टैरो कार्ड रीडर बनते हुए, एंड हालातों ने बना दिया. एंड आई वुड से कि मैंने कोई 8 या 10 प्रोफेशंस बदले होंगे जस्ट ट्राइंग टू सस्टेन. और नो वुमन शुड गिव अप. आई मीन वी आर शक्ति, वी आर एनर्जी, हमारे से ही सब कुछ है. तो गिव अप प्लीज़ मत कीजिए. जस्ट बी कंसिस्टेंट. आई वॉज कंसिस्टेंट. आई नेवर न्यू आई गेट टू दिस प्लेस वन डे. जब मैंने शुरू किया था बहुत लोगों ने डिस्करेज किया था, कोई जानता नहीं है टैरो, आप क्या कर रहे हो. बट आई नेवर गिव अप. फ्रॉम वन क्लाइंट इन अ मंथ to waiting for 3 months now. That's where I've come. Don't give up. Just don't give up. वंडरफुल मैसेज व्यूअर्स, डोंट गिव अप. पूनम सेठी की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है अपने आप में, आपने अभी सुना ही होगा, नेवर गिव अप. अच्छा पूनम जी, ये बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट में आप जैसी पावरफुल शक्ति जिसे कहें लेडी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक्चुअली व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट टू यू? Women empowerment is first empowering yourself. Nobody can, kind of promote women empowerment till we don't empower ourselves. So पहले अपने अंदर को strong करो. Be very strong from inside and don't let people, situations and all discourage you. क्योंकि ज़्यादातर pressures होते हैं, ladies पे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. Don't give in to that. जो खुद को चाहो, जो खुद बनना चाहो, वो ज़रूर करो. Fight the odds, but just empower yourselves first. अच्छा पूनम जी, लाइक आज भी हमारी कंट्री में बहुत बैकवर्ड है लेडीज़, चाहे हम जितना मर्जी चाहें. वो वाली सिचुएशन अभी भी नहीं आई है कि हम अपने डिसीजन सेल्फली खुद ले सकें, या हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होके भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं. तो आप इस चीज़ के लिए क्या हम मतलब चाहेंगी, कुछ एक बदलाव आना चाहिए? आप क्या मतलब बताना चाहेंगी इस चीज़ के बारे में, क्या बताना चाहेंगी? See, बदलाव आते रहता है. You can say the universe is going through change all the time. And आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते. And I think education is very important. What those women are, they don't realize. तो उनको खुद को रियलाइज़ करना है. This is something which you have to do it yourself. And थोड़ा सा अगर women खुद को समझने लगे कि हमें ये करना ही करना है, तो we won't need anybody to empower them. So please realize your talent, realize what you're worth. Actually अपनी रिस्पेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच पूनम जी, हमारे शो पे आके हमसे बात करने के लिए. ब्यूटीफुल इवेंट है जो हमारा डेली चिली का एंड वेडिंग मंत्रा का को कंबाइंड इवेंट है, इसका पार्ट बनने के लिए और हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए. थैंक यू. एंड आई मस्ट से कि आपका कोई भी इवेंट ठंडा नहीं होता, यू हॉट. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, चलिए आइए मैं आपकी बात कराती हूँ पूजा गर्ग, वाइस प्रेसिडेंट क्याना. एंड इन्होंने अभी रिसेंटली बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट का अवार्ड जीता है, एशिया स्पा अवार्ड जीता है. चलिए आइए इनसे भी कुछ इंस्पायर होते हैं वुमेंस डे पे. हेलो पूजा. Hi Ishika, how are you? आई एम फाइन. Yes, tell me. Okay Pooja, this is the eve of Women's Day. You are celebrating this with Uzuri Delhi and Bar, Delhi Chili, Wedding Mantra. So how you are feeling today? See, सबसे बड़ी बात तो है वुमेंस डे बहुत स्पेशल डे है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ कुछ भी हो वुमेंस के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती. आज किसी भी सक्सेसफुल मैन के पीछे भी एक वुमेन है, और वुमेन इज़ अ पावर एग्जैक्टली जिसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. और आज दिल्ली चिली अगेन, वेडिंग मंत्रा एंड इस बार के साथ इट इज़ अ रियली नाइस फीलिंग कि हम एटलीस्ट सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड एंड वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और जैसा आपने बोला कि अभी हम लोगों ने एंटी एजिंग स्पा प्रोडक्ट्स का अवार्ड जीता है. दिस इज़ द एशिया स्पा 2015 एंटी एजिंग प्रोडक्ट का अवार्ड हम लोगों ने जीता है, एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. बोटानिकल है तो आपकी स्किन पे अच्छा वर्क करता है, और मुझे लगता है कि आप कितने भी एजेड हो जाओ, आपकी एज जो है आपकी स्किन पर आनी नहीं चाहिए. दिस इज सीक्रेट ऑफ माई ब्यूटी ऑल्सो. लाइक वी कैन से कि एजिंग स्किन के ऊपर नज़र नहीं आनी चाहिए. आपकी स्किन इतनी फ्रेश लगनी चाहिए कि कोई आपकी एज ना गेस कर पाए. वंडरफुल. तो अब से मैं भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, एंड मेरे व्यूअर्स भी, आप भी फॉलो कीजिए पूजा गर्ग को, वही प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा. अच्छा पूजा, आप वुमेंस डे के इस मौके पे वुमेन एम्पावरमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू, डेली चिली के थ्रू? सी, डेली चिली के थ्रू मैं वुमेन एम्पावरमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों को वुमेंस को सपोर्ट करना चाहिए. एंड आज हर इंडस्ट्री में वुमेंस आगे हैं, और मतलब इट्स अ रियली गुड थिंग. लेकिन जो पीछे दिल्ली में हो रहा है या जो मीडिया में दिखाया जाता है वुमेंस के साथ, इट शुड नॉट बी देयर. मेंस को भी हम लोगों के साथ सबको मिलकर सपोर्ट करना है. इट्स ओनली नॉट वुमेन. सिर्फ वुमेंस के सपोर्ट करने से काम नहीं होगा.
हम सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा, डेली चिली को सपोर्ट करना होगा, दैट्स मेन इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर मीडिया. आप जितना सपोर्ट करोगे हम लोग ज़्यादा उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे. थैंक यू शिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस पार्टी, नाइस इवेंट. थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, आई एम रियली फ्यूल्ड अप टुडे. इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज़, इंस्पायरिंग वुमेन आज हमारे इवेंट के साथ जुड़ी हैं. अब मैं आपकी बात कराने जा रही हूँ, वो भी बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है. शी इज़ दीपा सोंदी, अ वेरी रिनोन्ड फैशन डिज़ाइनर. चलिए आइए उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ के बारे में स्पेशल क्या है. हेलो दीपा. Hi, Shikha. It's a pleasure to be here with you. And for me, like it's like I'm all with you for the celebrations of Delhi Chili and the wedding mantra. So Deepa, today at the eve of this Women's Day, a very special day for all of us. हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू मीडियम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेंस डे को, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को? अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी इंस्पायरिंग बात आप बताना चाहें? See, I being a wife, a mother, and a successful designer, I feel my life is complete, And a woman is, I think, the strongest part of the society. She should not only be respected, but she goes hand in hand with men. And today, what I am here is because of course, God. And then my daughter, who is again a woman. The brand runs on her name, Karishma Sondi. And this really gives me a very, it's a satisfying element that I'm here today. And I'm actually dressing up the beautiful ladies of the society. And I tell them, what you dream of, I'll make for you, this kind of a thing. So, which is really very inspiring for me and my daughter as well. वेरी इंस्पायरिंग दीपा एक्चुअली. अच्छा दीपा, ये बताइए वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट टू यू? हमारे थ्रू आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? See, the message I would like to convey to the women of today is that no matter what obstacles they face in their life, what kind of limitations they have as a woman, they should overcome all that, keep going ahead and try to achieve the target. That is the best thing they can do, because for a woman in India, I still feel there are a lot of limitations and obstacles, and they should have the power to overcome that. That is the women empowerment. Very well said, Deepa. Thank you so much for coming and talking. Thank you so much. My pleasure. Friends, चलिए आइए मैं आपकी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन से बात कराती हूँ. शी इज़ डिम्पल बावा, प्रेसिडेंट चेयर्स टू लाइफ फाउंडेशन, और वो एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं. चलिए आइए मैं उनसे बात कराती हूँ. उनकी लाइफ से आप इतने इंस्पायर हो जाएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा. हाय डिम्पल. Hi Shikha, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm good. Happy Women's Day. Same to you. Okay, Dimple, thank you for coming to our event, Delhi Chili and Wedding Mantra, combining this event for Women's Day. Okay, Dimple, tell us something very inspiring about your life. मैं चाहती हूँ पूरा वर्ल्ड जाने आपके बारे में. See, life is so unpredictable. You never know what happens next. It can bring you a moment of joy and sorrow at the same time. So when cancer hit me, I was not prepared for it. But I accepted it and fought it. And here I am today with Cheers to Life Foundation. That is going to help millions of others. So I totally believe together we can beat cancer. Take charge of your life. After all, it's a priority. It's a priority. You cannot just let go of your life. That's the message I would like to give. Oh, what a strong woman she is, viewers. She's a cancer survivor. Now she's perfectly fine. आपके सामने खड़ी हैं. चले आइए हमसे पूछते हैं. Actually, Dimple, what is women empowerment to you? आज की डेट में till now, you are a very strong woman. I am seeing. लेकिन still, women की situation बड़ी degraded है. I agree. Women are really, they are being so many crimes. You read it every day in the newspaper, hear it on the news channels and everything. In every aspect of life, they are being molested or something like that. They are being abused. Maybe not physically, but socially or in some way, in a professional abuse as well. So for the women empowerment, we as a woman have to join hands. We cannot just rely on men. So I totally believe that women have the power. Men, they will just question how, when and all that. Women, if they take charge, they just do it. By hook or crook, they'll do it. So you have to, empower your soul within. That yes, you have the power, you have to have that faith in yourself. Thank you, Dimple, for coming to this beautiful event, to be a part of this event. Thank you.
pleasure. It's always lovely to meet you. So, friends, I'm here again with a very special personality. She is an international fashion designer, though a celebrity designer as well. She is none other than Rosie Ahluwalia. Hello, Rosie. Welcome on the show. Hi, thank you so much, Barka and Shika. I'm actually obliged being here, being a part of your event today, and I feel so blessed. I'm associated with you guys. Pleasure, pleasure. Okay, Rosie, on this beautiful occasion of Women's Day, Delhi Chile is celebrating it with Wedding Mantra and this beautiful Uzuri Delhi and Bar. How you are feeling? I'm feeling very nice, and I'm feeling you guys have actually brought all the women together, and we feel so happy. We are being called and invited for this kind of event, even though we don't have time, but still you guys have actually pulled up time for us. And what else can I ask more on this special day, especially? ओके रोजी, सो आप क्या नया ला रहे हैं ऑन दिस ओकेजन? आप बताना चाहेंगे, पूरे वर्ल्ड को बताइए, एक मैसेज दीजिए, आप क्या नया लाना चाह रहे हैं वुमेंस डे के ओकेजन पे? यू आर अ ब्यूटीफुल डिजाइनर, ब्यूटीफुल गाउन यू आर वेयरिंग. Thank you so much, Shikha. And for this season, I really want to bring Law Western, because I think these ladies have become too modern. They don't want to carry Indian outfits, Indian attire. So I feel they want to be more comfortable with long printed dresses. So you'll see a lot of new designs in my upcoming shows. And I'm sure all the ladies are going to love my attire, what I want to design for them. Lovely, Rosie. Acha, Rosie, what is women empowerment to you, being a very successful independent woman yourself? What is the message to the world? Always try, always work hard, try, don't let it things to happen ki on the time. One should try their hard work. I think the time gives you back everything. So all the women over there, who's ever hearing me, must give a chance, and do not spoil a life. It's one life. Go ahead, do what you want, and inspire the women also. Thank you so much, Rosie, for coming to this beautiful occasion, and thank you so much for coming. Thank you so much, Shikha and Barka, and I'm obliged coming here. Thank you. Hello friends, I'm here with a very, very special personality, Ishika Taneja. Her name needs no introduction. She is a Guinness World Book record holder and Executive Director Alps Beauty Clinic. चलिए आइए उनसे भी पूछते हैं उनको आज यहाँ पर हमारी वुमेंस डे की पार्टी में आके कैसा लगा. इट्स कंबाइंड विद वेडिंग मंत्रा एज वेल. चलिए उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं. हाय इशिका. Hi, how are you? I'm fine. Ishika, being a very successful, stylish and independent woman, what is your message to the world for Women's Day? I think believe in yourself and then you'll really do well. Follow your passion, follow your dreams and have no foundations. Just follow your path. ऐसी कोई इंस्पायरिंग बात, ऐसी कोई मोटिवेशनल बात जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें इशिका? बिकॉज हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, वो भी बहुत इंस्पायर होना चाहते हैं. सी जब मैंने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहा था या जब मैं हॉलीवुड में जाके काम करना चाह रही थी तो सब ने मुझे मना करा था, नहीं हो नहीं सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल. 60 मिनट्स में तुम 60 लुक्स कर ही नहीं सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. बट आई थिंक बिलीविंग इन वॉट यू डू एंड प्रैक्टिसिंग हार्ड, गिविंग योर हार्ड वर्क, एंड आई थिंक विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लविंग योर वर्क. एंड वंस यू डू दैट देयर इज़ नो थिंग एज सच कि कुछ लाइक देयर इज समथिंग इम्पॉसिबल. इवन इम्पॉसिबल स्पेल्स दैट आई एम possible. Wow, what an inspiring message. Even impossible spells I am possible. Okay, Ishika, ये बताइए, what is women empowerment actually to you? Women empowerment means, for me, I think to be free, to follow your dreams, follow your path, to do what you want to. There is nothing that you have to ask someone. If you want to work, you work. If you want to take care of the family, you take care. If you want to be free, you be free, you know. That is empowerment for me. वाओ. ओके इशिका, टेल अस, आपको आज हमारे इस वुमेंस डे के स्पेशल ओकेजन पे दिल्ली चिली एंड वेडिंग मंत्रा का जो उजरी डेली एंड बार में इवेंट है वुमेंस डे का, आपको कैसा लगा? I really love the location. बहुत अच्छी location है. The food is amazing. The sangrias that you're serving is out of the world. I think it's a beautiful event, and what I really like about this event is that there are such nice and successful women getting together, and you know this thing motivates people that I want to be there. I want to be at that level. So I think it's a very nice effort from your side as well. So very well done. Thank you so much, Ishika, for coming and talking to my show. Thank you so much. My pleasure.
So friends, I'm here again with a very special personality, Gunjan Gaur. A name needs again no introduction. Friends, she is Executive Director Abs Beauty Clinic and her specialty is the permanent makeup, especially for cancer victims. Yes. चलिए आइए गुंजन गौर से थोड़ा इंस्पायर होते हैं. Hello Gunjan, welcome on the show. Hi, how are you? I'm fine. Yes, tell me. Okay, Gunjan, on this special occasion, on this beautiful occasion of Women's Day, we are celebrating here with Wedding Mantra. Delhi Chili is celebrating here with Wedding Mantra. How you are feeling to be a part of this event? It's always great. It's always great to be part of Delhi Chili anyways. And addition of Wedding Mantra is just, it's a cherry on cake. So it's always good. Thank you. Okay, Gunjan, being a very successful woman yourself, what do you want? What is the special message, any inspiring thing you want to tell my viewers about yourself, about your life? See, if I tell about inspiring about my life, I would always say that, why I am successful, or I believe anybody can be successful if you work for 23 hours and 1 hour you give it to yourself. Reward yourself that 1 hour every day. Be happy in that 1 hour. Do it for yourself. चाहे आप housewife हैं, चाहे आप working हैं, चाहे आप top of the top woman हैं. Agreed. Work, party, throw things, but in the end of the day, 1 hour, just do it for yourself. Enjoy yourself, whatever you do, and you'll see that you're performing 23 hours much better than anything else. Wow, this is really very inspiring, Gunjan ji. Actually, Gunjan ji, I want to know what is women empowerment actually to you, because to me, you are woman who's empowering the other women. Tell me, what is according to you women empowerment is? See, what I feel personally that, woman is a mother. For me, every woman is a mother who's given birth to somebody. Or even if you're not giving birth, you are educating somebody, you are nurturing somebody, you are growing somebody, be it a son or be it a daughter. Just tell them to respect other women. Imagine if your son and your daughter both respect women, every woman will be empowered herself. She'll feel pride herself. It doesn't have to be very socially, or economically independent. You can be absolutely beautiful, but even if you're not, just feel pride in what you are and tell your son and your daughter to feel pride of every woman who's around you. And I think you don't need a special day for Women's Day. The whole world is, whole year is for women. Thank you. Thank you so much for inspiring, Gunjan ji. Hello friends, feeling so much blessed today. Today I am here with Jay Madan, celebrity astrologer. Her name needs no introduction. A very hot and sizzling personality. चलिए आइए बात कराती हूँ आपकी मैं जय मैदान से. Hello Jay, welcome on the show. Hello, thank you. How are you? I'm fine. Happy Women's Day. Same to you, Shikha. Okay, Jay, on the eve of this Women's Day with Delhi Chili and Wedding Mantra, saluting the women like you, what is your message to the world? My message would be that, if you have girls in the house, if you are blessed with a daughter, or you have kids around you, I think you have to nurture every girl so that she blossoms into a better woman. So that's what I expect every woman to do. Spread awareness and happiness. This is really something very inspiring. Any other thing, any very inspiring thing you want to share on this beautiful occasion? Yes, because I'm an astrologer and I believe in real good karmas, because that's how your destiny changes. This is my firm belief. So I suggest that everybody should pick up 2 to 3 wrappers from the road and put it into dustbin. When you clear the environment around you, God clears your karmas. So don't think that who has thrown them. Just pick them up and put it into dustbin. Your life changes in a month. Oh my God, this is something magical tip you have given to us. You have to keep your surroundings clean to keep your soul clean. Okay. जय, आप बताई दीजिए सबसे ज़्यादा यंगेस्ट टैरो हम जानना चाहते हैं. यंगेस्ट टैरो की मैं बात कर रही हूँ. जय आपको बताएंगी ये सीक्रेट क्या है? My daughter is 11 years old and she's youngest tarot reader in the world. So when she was 7, she used to see me doing tarot and that's how she picked up. But because बच्चे बहुत ज़्यादा divine से connected होते हैं, I suggest every child should be connected. चाहे रामायण से निकाले, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब से निकाले, चाहे tarot से निकाले, so that they always get right guidance from him. Wow, this is something really, really, really inspiring. Thank you so much, Jay, for coming. My pleasure. So friends, now I'm with Parul Mahajan, a very famous interior designer. चलिए आइए उनकी भी लाइफ के बारे में कुछ इंस्पायरिंग जानते हैं. Hello Parul. Hello. How are you? Good, how are you? Happy Women's Day. Thank you, same to you. Okay Parul, on this beautiful occasion, you are celebrating here with Delhi Chili and Wedding Mantra. How you are feeling? I'm feeling very elated because I feel that, we are one of the
blessed, empowered women. Not everybody is as lucky as us, and I believe that we should help as many people, as many women getting empowered like we are empowered today. Wow, what a wonderful message you are spreading. Okay, Parul, anything special, anything inspiring you want to share with my viewers? Anything inspiring? I just want to inspire and empower all women around me. I'm an interior designer, but I'm also a law graduate by profession. So I used to very actively work with the women's cell, empowering women, making them aware about their rights and not using them in a bad manner. Like the misuse of 498A, domestic violence, not like that, but enabling them to protect themselves and safeguard themselves from whatever violence is happening around. So on every Women's Day, I always go to a nearby slum. I distribute some gift to them and, give them a small lecture or something to empower, help them know their rights better, to live a better life. Wow, this is something really inspiring. Okay, Parul, what is you are a successful independent woman. What is a woman empowerment to you? Woman empowerment for me is being socially, economically, politically and independently, like mentally independent, emotionally independent. I feel that the reins of your happiness should only be in your hands and in nobody else's hands. You should be attached and detached. Even it can be your husband, even your child, anybody. Empowerment means you should be self-sufficient, independent. So thank you so much, Parul, for coming and talking to my show. Thank you so much. Thank you so much. So friends, I'm here again with a very famous designer, Shilpa Raina Wahal. चलिए फ्रेंड्स, उनसे ही पूछते हैं उनकी लाइफ कैसे एक इंस्पायरिंग जर्नी है हमारे लिए. अपनी लाइफ जर्नी के बारे में उन्हीं से पूछते हैं. हाय शिल्पा. Hi. हैप्पी वुमेन्स डे. Happy Women's Day to all the beautiful women out there. Okay, Shilpa, how you are feeling? The event at Uzuri, Delhi Chili and Wedding Mantras combined event for Women's Day. How you are feeling here? I'm feeling really great to be a part of this event. Thank you so much, Shika, for inviting me, first of all, and you're doing a great job with everything else. And, it's really great to meet all these young, inspiring women here, and you feel encouraged and you feel inspired all the more. Okay, Shilpa, being very successful and independent fashion designer yourself, what is your message to the world? Being a woman yourself, how do you feel? It's actually the way, like we are independent, but I don't think it's the same for the vice versa for others as well. How you feel? I think as a woman, when you are born as a woman, I think that moment only you should start thinking that you are 100 times, you have much more power than men. Nothing should stop you. Like, I'm married, I have a kid, and that doesn't mean that, you leave that part of if you're creative and everything, don't waste your talent in the kitchen all the time or at home. You can go out, you can manage both the things very, very maturely if you have the patience and everything, which all the women by birth, if you're an Indian woman, you have the patience. So I think that you can take care of the kid, take care of your husband, and still be doing something which you are passionate about. Like, after having my kid only, I got more inspired to do my own brand and launch Miss Ajor. So I think every woman can do that. That's really inspiring, Shilpa. Thank you for coming and talking to me. Thank you so much, Shika. All the best. Thank you.